Hello everyone. So today I'm with another topic of business study, that is leadership. As I already told you in my previous video of directing, that leadership is an element of directing. So let's study what is leadership. So leadership is an attempt aimed at influencing people directly towards the attainment of given goals. So leadership एक attempt है जिसमें आप दूसरे people के behavior को influence करते हैं जिससे कि आपके जो भी specified goals हैं, certain goals हैं, वो achieve हो सकें. In simple words, you can say that leadership is a process of influencing the behavior of people at work towards the achievement of specified goals. But one thing you should be kept in mind while learning about leadership, that there are few elements present in the leadership. So that few elements are that leadership is a process of influence, and in the influence is always for achievement of common goal, and there must be or minimum two or more persons present while influencing, because influencing your own behavior is not leadership. And another element is the influence should be to get the willing cooperation of the employees and not the forceful cooperation. So आपके employees को आप forcefully कुछ नहीं कराएंगे और willingly वो cooperate करें आपके साथ. So these are the elements must be present in leadership. So I hope कि आपको clear हो गया है leadership क्या है. Okay, now we have some features of leadership. That leadership indicates the ability of an individual to influence others. Leadership tries to bring change in behavior. Leadership shows interpersonal relationship between leader and the follower. Leadership is to achieve common goal, and leadership is a continuous process. So these are some of the features of leadership. Okay, now we will quickly move on to the main and the important topic of this video, that is leadership style. So leadership style refers to a leader's behavioral pattern. So leadership style जो है वो एक leader के behavior के pattern पे based है पूरा, and you can simply say that leadership style is a leader's method of providing direction, implementing plans and motivating people. So leadership style में completely आपको ये पता चलता है कि एक particular leader का method क्या है पीपल को मोटिवेट करने का, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करने का और प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने का. एंड मोर ओवर यू कैन से डैट अ लीडरशिप स्टाइल टोटली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ फॉलोअर्स एंड द एटमॉस्फेयर प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो ये लीडर के बिहेवियर के साथ साथ इस पे भी डिपेंड करता है कि फॉलोअर्स के क्या टाइप है और कैसा ऑर्गेनाइजेशन में एटमॉस्फेयर प्रिवेल हो रहा है. ओके, सो there are some different types of leadership styles, such as autocratic leadership, participative leadership, or you can say democratic leadership, and another is free rein leadership, or you can say laissez-faire leadership. So a leader may use all styles of leadership at different periods of time, but one style tend to predominate his or her personality. So एक leader जो है different period में different type की leadership styles अडॉप्ट कर सकता है, बट कोई एक पर्टिकुलर स्टाइल होती है जिससे उसकी पर्सनालिटी उभर करके आती है. सो ऑन द बेसिस ऑफ हाउ लीडर्स यूज देयर पावर, लीडरशिप स्टाइल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, दैट इज ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव लीडरशिप. Another one is consultative leadership, democratic leadership or participative leadership. And third one is free rein leadership, laissez-faire leadership or delegative leadership. Okay, so we will discuss about these 3 types of leadership style slowly in this particular video. Let's start. So our first is autocratic leader or authoritative leadership. So it is completely boss centered leadership. यहाँ पे एक बॉस होता है जो सिंपल लोगों को अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कराता रहता है. यू कैन नॉर्मली से डैट एन ऑटोक्रेटिक लीडर एक्सरसाइजेस कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबॉर्डिनेट्स, एंड ही सेंट्रलाइजेस द पावर इन हिमसेल्फ एंड टेक्स ऑल डिसीजंस विदाउट कंसल्टिंग द सबॉर्डिनेट्स, एंड ही डज नॉट डेलीगेट अथॉरिटी ऑल्सो, and the leader gives order and expect the subordinates to follow them unquestioningly.
and he gives reward and puts penalty to direct the subordinate. So autocratic leader में एक पर्टिकुलर लीडर होता है जिसके पास सारी पावर होती है, सारे डिसीजंस वही लेता है और वो अपनी अथॉरिटी किसी को भी डेलीगेट नहीं करता है. और जब सारे कंट्रोल उसके पास है, सारी पावर उसके पास है, तो वो एक्सपेक्ट करता है सबॉर्डिनेट्स को कि वो उनसे बिना कोई क्वेश्चन पूछे उसके सारे डिसीजंस को फॉलो करते रहें. सो this type of leadership is suitable when subordinates are uneducated, unskilled, lack of knowledge and experience on part of the subordinates. So ये पर्टिकुलर स्टाइल जो लीडरशिप का है ये तभी सुइटेबल होता है जब आपके सबॉर्डिनेट्स अनएजुकेटेड, अनस्किल्ड होते हैं, उनके पास पर्टिकुलर नॉलेज नहीं होती, एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो ये लीडरशिप स्टाइल सबसे बेस्ट होती है. I have a very good example about this autocratic leader, that is Adolf Hitler. He discouraged his cabinet to meet independently and he expected absolute obedience from his cabinet members. So it is a perfect example of an autocratic leader. And with this we have some of advantages of this particular leader, that it involves quick decision making and it can bring positive results when great speed is required, and it also provides strong motivation and satisfaction to the leader who dictates terms. And with some advantages, this type of leader has some disadvantages also, that it leads to frustration and low morale among subordinates. Another disadvantage is no development of subordinate takes place under this particular leader. And basically nowadays this style is less desirable as employees are becoming more educated and well organized. सो आई होप कि क्लियर हो गया है आपको ऑटोक्रेटिक लीडर के बारे में. तो जहाँ यहाँ पे एक पर्टिकुलर लीडर होता है जो कि बॉस होता है सबका, और वो सिंपल ऑर्डर देता है और ये एक्सपेक्ट करता है कि सारे सबॉर्डिनेट्स उसको सुने. नाउ वी हैव अनदर लीडरशिप स्टाइल, दैट इज डेमोक्रेटिक लीडर. सो this is simply, you can say that it is a group center, because under this style leaders takes decision in consultation and participation with the employees. So इस particular leadership style में जो भी decision leader लेता है वो employees के consultation और participation के बाद ही लेता है. And in this particular leadership style the leader delegates and decentralizes the authority, and moreover leader follows the opinion of majority and he provides freedom of thinking and expression too. He listens to the suggestions, grievances and opinions of the subordinates. So इस particular leadership style में leader जो है जो भी decisions लेता है वो अपने employees के consultation और participation के बाद ही लेता है. Okay, we have example of this particular democratic leader is Narayan Murthy. So Narayan Murthy, under his guidance employees of Infosys were encouraged to communicate freely with each other and give suggestions. तो नारायण मूर्ति जो हैं वो Infosys के employees को guide करते हैं और उनसे freely communicate करते हैं, उनके suggestions लेते हैं. This is the best example I think for this particular leader. And moreover this type of leadership style is suitable when goal of company is to encourage or increase job satisfaction and independence of employees, and moreover when subordinates have expected the goal of organization, this type of leadership style is suitable. But we have some of advantages of this democratic leadership, that it improves the job satisfaction and morale of the employees. It also improves decision making ability of the subordinate, and it develops positive attitude, and it also reduces labor turnover and labor absenteeism. But with some of the advantages, this particular leadership style has some disadvantages also, that it may result in time consuming and delay in decisions also, and sometime it may not yield positive results because subordinates prefer minimum interaction with the leader. So these are some of the advantages and disadvantages regarding this particular leadership style. I hope आपको clear हो गया है. Now we will quickly move on to our third leadership style, that is free reign leader, or you can say it is also as laissez-faire leader, which means no interference in the affairs of others. And
इसको हम डेलीगेटिव लीडरशिप स्टाइल भी बोलते हैं, बिकॉज दिस स्टाइल इन्वॉल्व्स कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सो डैट सबॉर्डिनेट्स देमसेल्फ टेक डिसीजन. सो यहाँ पे इसको डेलीगेटिव लीडरशिप इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटी का कंप्लीट डेलीगेशन हो जाता है, जिससे कि सबॉर्डिनेट्स जो हैं अपने आप डिसीजंस ले सकें. एंड इन दिस स्टाइल लीडर अवॉइड्स पावर and he serves only as a contact to bring information and resources needed by the subordinates. So यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स जो होते हैं वो अपने आप वर्क करते हैं अपनी चॉइस और अपनी कंपिटेंस के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे कंप्लीट डेलीगेशन हो जाता है अथॉरिटी का. यहाँ पे फ्री रेन लीडर जो है वो उसके पास कोई पावर नहीं होती और वो अपनी सारी पावर जो है वो सबॉर्डिनेट्स को दे देता है या सरेंडर कर देता है. मोर this type of leadership style is suitable when subordinates are well trained and highly knowledgeable, or you can say that subordinates are self motivated and are ready to assume responsibility. We have some advantages of this particular leadership style, that the positive effect on the job satisfaction and morale of subordinates increases in this particular leadership style, and it also and subordinates have maximum scope for the development also, and there will be full utilization of potential and capacity of the employees. But as you know that with some advantages disadvantages also come. So some disadvantages regarding this particular leadership style is, in this subordinates do not get the guidance and support of the leader, and it also ignores the contribution of leader. And in this particular leadership style subordinates may work in different direction and which result in chaos. Okay, and now I will explain you some of the differences between this particular leadership style. So let's study. See, as I already told you that in autocratic or authoritative style लीडर ओनली मेक्स डिसीजन. सी लीडर जो है वो सिर्फ डिसीजन लेता है यहाँ पे. एंड इन डेमोक्रेटिक स्टाइल लीडर मेक्स डिसीजन इन कंसल्टेशन विद द सबॉर्डिनेट्स. सो जो भी लीडर डिसीजन लेता है वो एम्प्लॉयज़ के साथ में लेता है. ओके, एंड इन लेजर फेयर स्टाइल सबॉर्डिनेट देमसेल्व्स मेक डिसीजन. तो एवरी पावर इज इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉयज़. एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू डैट in authoritative style there is a one way communication. इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लीडर ही जो है वो अपने ऑर्डर्स देता है और सबॉर्डिनेट्स को उसको बिना किसी क्वेश्चन के फॉलो करना होता है. एंड इन दिस पर्टिकुलर डेमोक्रेटिक स्टाइल देयर इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन, बिकॉज उधर से लीडर जो है वो एम्प्लॉयज़ के सजेशंस और कंसल्टेशंस लेता रहता है. एंड इन लेजर फेयर स्टाइल देयर इज़ अ फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. दोनों एक दूसरे से बात करते हैं. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू मोटिवेशन टेक्निक देयर इज़ अ निगेटिव मोटिवेशन इन दिस particular authoritarian or authoritative style, and in democratic style there is a reward and involvement, or you can say positive motivation. And in this particular free reign style there is self direction and self control style, or you can say it is a technique of motivation. And another difference is delegation of authority. So in this particular authoritarian style there is no delegation of authority. In this democratic style there is delegation of authority, but to some extent only. But in laissez-faire style there is complete delegation of authority. And according to the control, you can say that in authoritative style the leader has full control, but in democratic style there is group centered, or you can say there is less control over the employees. And in laissez-faire style it is individual centered, or you can say the control is very low in this particular style. Okay, I hope कि आपको ये सारे differences clear हो गए हैं कि what is authoritative style, what is democratic style and what is laissez-faire स्टाइल. आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि व्हाट इज़ लीडरशिप, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लीडरशिप एंड व्हाट आर द स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, एंड व्हाट आर अथॉरिटेटिव लीडर
and democratic leader and free reign leader. Please go through your book, read it from there, and if you feel any query regarding this particular topic, please feel free to ask your queries. Okay, thank you.